फॉर्मेट हम्म है, ये फॉर्मेट इन्होंने दे चेंज द फॉर्मेट। अर्लियर मैचेस कम होते थे इन 1999, 96, हम्म 2003 हम्म मैचेस वर लेस। अभी 2015 हम्म और 2019 में तो आप अभी क्या है, 9 लीग मैचेस खेल रहे हैं, आपको सारे याद नहीं रह सकते कि व्हाट हैपेंड देयर। हम्म। तो नहीं नहीं, ये थोड़ा सा 2015 है का तो सेम सिचुएशन इस फॉर्मेट कारण। था, 2015 नहीं, का भी अभी सेम फॉर्मेट एक्चुअली था। इंफॉर्मेशन ओवरलोड लोड हो गया है, मतलब इतना सोशल हाँ मीडिया ये सब है ना। पहले क्या होता था भाई, हम टीवी देखते थे या पेपर पढ़ते थे भाई, मेमोरी में स्टोर होता था वो सब चीजें। अभी मतलब हमें याद नहीं रहता So we ये just finished मतलब। our भाई, quiz, और guys, ये and तो I'm slightly मतलब disappointed अब by जैसे my. मतलब अब जैसे मुझे ना यही नहीं एंड पता है कि एंड 2000 दूसरी चीज 2000 ये भी है, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सेमीफाइनल था, उसका सेकंड सेमीफाइनल किसका था? सिर्फ वो पाकिस्तान वाला पता है जो वेट ने वेट जिताया, में सेकंड छक्के वाला मारे तो थे. याद ही नहीं है कि भाई था किसके इन्फॉर्म बीच में But उसके लिए सेकंड सेमीफाइनल। वाला ने वो जिमी निशम ने इंफॉर्मेशन जिताया था। हाँ, ओवरलोड। इंग्लैंड वो न्यूजीलैंड. ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा अच्छा सेमीफाइनल हुआ था वो जिमी निशम वाला। So actually, जो England New उसने Zealand rivalry is building up very nicely in the वो 50th of डैरिल format. मिचेल, They're डैरिल often meeting मिचेल in the उसमें था ना। knockouts. England New Zealand are often meeting in the और knockouts. मुझे इंफॉर्मेशन ओवरलोड के 2019 का साथ साथ एक्चुअली याद नहीं था सेमीफाइनल, मैं अभी बीच में देख रहा था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें जेसन रॉय ने फोड़ दिया था भाई। Yeah, वो Jason Ryan. वो मुझे याद नहीं था हाँ, इनफैक्ट। Chalo guys, for our viewers, इंफॉर्मेशन let me ओवरलोड recap. के साथ साथ क्या होता है कि आजकल सारे वर्ल्ड कप में है ना, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाते हैं। तो हम्म ऐसा कुछ इशू नहीं बनता कि कोई याद रहे कि क्या हुआ। जैसे हम्म 2011 में पता है कि भाई इंडिया में है, तो हो सकता है एंड मोमेंट पे वेन्यू ही चेंज हो जाए इधर से उधर, कि भाई आपको वहां खेलने जाना है। तो हम्म वो ऐसी चीजें याद रह जाती है कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। वर्ल्ड कप भी ओवर हो हम्म। रहा है ना यार, 21 में वर्ल्ड कप, 22 में वर्ल्ड कप, 23 में फिर हाँ, वर्ल्ड कप, T20 24 वर्ल्ड में कप फिर बहुत वर्ल्ड ज्यादा हो कप, जाते हैं हाँ, सडनली. वही वही 25 में चैंपियंस ट्रॉफी बहुत हर To साल ज्यादा। वर्ल्ड कप recap हो रहा our है। viewers, we just conducted a quiz and I'm very surprised by my participant performance. Everyone was below par. But हम यही सजेस्ट कर रहे थे कि हम लोगों को 2003 99 वर्ल्ड कप ज्यादा याद है, recent वर्ल्ड कप याद नहीं है, और most of the questions were from 2019 वर्ल्ड कप. So maybe that's the reason. Anyways, it's time to announce winners. We had 13 questions and each question was 1000 points in 90 meters. So for 13,000 points could have been achieved by someone. I was expecting really winner to have 10,000 points, but the winner has 4,300 points, and the winner is Shikhar. ये And क्विज या क्विज मास्टर विंस। the second is Devanshu Bhai, 2,900 points. And then ग्रेट। third is Kunal, 1,900 points. Shreyans Bhai is fourth, 1,500 ओ points. भाई, Vishnu missed out श्रेयांश the first few श्रेयांश questions. भाई हु वन द वर्ल्ड कप का लॉन्ग क्विज हैज। Yeah, and he has actually won all of our quizzes, if I remember correctly. यस, मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इस हारी बार थी नहीं ना यार। जीतेगी वर्ल्ड कप। नहीं नहीं, श्रेयांश भाई के ऑस्ट्रेलिया तरह होगा नहीं 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 इंग्लैंड नहीं के नहीं साथ। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया 2011 हारी थी ना भाई, दो जीतने के बाद वैसा है। इनफैक्ट तीन जीती थी यार, 99, तीन तीन 2003, जीती. 2007। तीन तीन। हाँ, चौथा हारी थी भाई सीधा, हाँ तीन लगातार जीती थी। यस। हम्म, So yeah, युवराज सिंह बन गया मैं आपके लिए। अरे द नॉस्टैल्जिया का रिसर्च थोड़ा हेल्प हुआ होगा शायद, एंड योर प्रीवियस क्विज क्वेश्चंस एज वेल. नहीं एक्चुअली यार, वो दो दो क्वेश्चन तो मैं आंसर ही नहीं कर पाया, वो मतलब टाइम खत्म हो गया या क्विकली रिव्यू एकदम करना है लगाया क्या एक रहा बार नहीं। क्विज, बिकॉज वो फर्स्ट दो क्वेश्चन ऑडियंस ने शायद देखा नहीं था. अगर करना है तो मतलब एक बार मैं वापस से स्लाइड्स दिखा हाँ, सकता हूँ. क्विक रिव्यू कर सकते हैं एक बार। हाँ, विष्णु कैन आल्सो सी. बट ओ या. Just 5 minutes. nostalgia preparation, I don't think it helped me that much, but that quiz preparation, because I did a lot of research for that quiz. If you Yeah, remember, the I questions were remember I was watching very that video. elaborate kind of Hmm. questions. True. So yeah, First World Cup match outside England. so yeah, मैं विष्णु यू मिस्ड इट, बट ये सचिन का सिक्स का पिक्चर लगाया था बैकग्राउंड में. Oh, okay. द एपिक एंड्रू कैडिक कुछ सिक्स मारा था. पता है एक्चुअली Hmm. ये मैं अभी आज पूरा दिन वही सोच रहा था कि अपन क्या सच में वो मिरेकल हो सकता था, जैसे 1983 में वर्ल्ड कप जीत सकते हो तो अपन वो फाइनल जीत सकते थे क्या 2003 का. तो बचपन से अभी तक वही क्वेश्चन सोचता हूँ कि क्या ऐसा डिफरेंटली होता उस दिन कि हम लोग फाइनल जीत जाते. बिकॉज Batting फॉर first मी, तो जब भी सचिन must. ने सिक्स मारा था ना तो मुझे ऐसा लगने लगा था एज अ किड, सचिन सुपर नेचुरल है और ये वर्ल्ड कप हमको जिताएगा. बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल में ऐसा नहीं हो पाया. Hmm.
तो या एक क्वेश्चन था कि ये ओडीआई बैटर्स जो लेजेंड है 10,000 प्लस रन, उसमें से सबसे खराब वर्ल्ड कप किसका गया है? ऑडियंस, मेरे पार्टिसिपेंट्स को ये क्वेश्चन पसंद नहीं आया बिकॉज वर्डिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट इसका सही आंसर था इंजमामुल हक, जिसका बहुत ही खराब एवरेज है और एक भी सेंचुरीज नहीं है। क्योंकि इसका फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट है, इट इज नॉट अबाउट एवरेज 23, इट इज 0 हंड्रेड्स। तो या हम सबने वही चीज एक्चुअली देखा कि 0 हंड्रेड्स तो, और सबको वो वाइडली पता है कि एम एस धोनी का 91 91 जो है हाँ। वो हाईएस्ट स्कोर है वर्ल्ड कप्स में, तो इसीलिए हम या मे बी मुझे क्वेश्चन का इंजमाम का 74 है, तो मेरे को शायद क्वेश्चन ऐसे लिखना था कि ओनली हाईएस्ट स्कोर ऑफ 74 एंड एन एवरेज ऑफ 23, सो या गुड क्रिटिसिज्म ऑन दैट। देन मैंने अपनी फेवरेट टीम का क्वेश्चन डाला था, अफगानिस्तान का, उनका एक ही विन है वर्ल्ड कप में, तो विच इज अगेंस्ट स्कॉटलैंड, बट नो वन गॉट दिस। Oh, is दिस it? वाज अ गुड क्वेश्चन। Yeah. And then we have, this was a good one also, I think, best toss win percentage किस कैप्टन का है? Oh, yeah, you रैंडम know था, me. बट इट वाज अ गुड वन। Yeah, again no one got this right. It was मैंने on करा target भाई। 65%. मैंने भी किया था Oh यॉन sorry, 3 मॉर्गन। लोगों को सही आया था इसमें। तीन Yeah. Then क्योंकि highest मुझे पता था rating, पॉन्टिंग second लक से only. नहीं जीतता है, इट विल हैव टू बी मॉर्गन ओनली, बाकी तो highest दिस strike इज rate in World Cup, very confused, like very shocking results. Maxwell with बिकॉज 169 strike rate. मैक्सवेल ओनली हैड 501 रन्स, दैट्स व्हाई। Yeah, And his 60% was only not good good. performance came in 2015. 2019 में यस, कुछ Yes. Yeah, हाँ 2015, World Cup yeah. में he यस। had an excellent World Cup. That's why 2015 में he had one good knock against England and sorry India and Sri Lanka. yeah. I India will के be shocked against if भी he can semi-final play में। as good as his previous performances in this World Cup. And this was I was surprised because I was hoping that Shreyans bhai and Shikhar bhai will know this, but Who We also answered got this? confused actually. no one answered this. No Yeah. one. Okay. And इसके लिए मैंने एक पॉइंट बोला था कि इंडिया का कोई विन नहीं था 1979 में, and they won the next World Cup. So Afghanistan will do that. यस, वो अफगानिस्तान। This was a very good question. I think Dev bhai answered this one. यस, Yeah, this is a very अफगानिस्तान। good answer. At number 11 in World Cup matches, it was Shoaib Akhtar, 40, very fast 43. And देवांशु भाई ने coincidentally, मुझे मिसगाइड कर दिया 2003 वर्ल्ड कप से। मैं एक्चुअली वो एंडी बिकेल और ब्रेट ली का पार्टनरशिप सोचने लगा नहीं कि तो, ब्रेट बट ली ने, इट वाज आल्सो 2003 वर्ल्ड कप ना। हाँ yeah, राइट, बट मेरा coincidentally, थॉट Shoaib वहां गया। Akhtar ने अपना फास्टेस्ट बॉल भी इसी मैच में डाला था, just for our viewers. अगेंस्ट ये अगर न्यूजीलैंड। डेटा तू देता तो ये क्वेश्चन थोड़ा और गेटेबल नहीं हो जाता। कंफ्यूजन होता ब्रेटली की वजह से। नहीं, अरे दिस इज अ रॉन्ग थिंग। वो उतने फास्टेस्ट इसमें नहीं डाला था, फास्टेस्ट वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दिस मैच वाज नहीं अगेंस्ट इंग्लैंड के इंग्लैंड। अगेंस्ट था। नहीं, निक नाइट को डाला था। इंग्लैंड निक नाइट को डाला था। निक नाइट, यस। Actually ये जयसूर्या में आंसर करता था ये. या जयसूर्या कैसा सही है, शाकिब का 1 सेंचुरी कम है, उसका 2 है। एक कम था यार। एंड देन लूजिंग कॉज में जो स्प्लेंडेड हंड्रेड्स है उसमें एक ही You मैन know ऑफ द what, मैच Shikhar? है। I remember this answer in your previous World Cup का quiz में. यस You said इसलिए this शिखर his इज name. वन दिस क्विज। आई थॉट या सब लोग इसका सचिन मार देंगे बिकॉज 137। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी बाकी मैचेस है ना, उसमें सम अदर पर्सन फ्रॉम द ऑपोजिशन आल्सो स्कोर्ड 100, बट सचिन वाले मैच में जयसूर्या ओनली मेड 79 एंड ही गॉट अ मैन ऑफ द मैच। But 79 in 50 balls. He made 79 in 50 balls and he picked wickets in that match. Yeah, South Africa had a terrible ये भी 2021. मेरा सिर्फ करेक्ट था Yeah. ये वाला क्वेश्चन। Yeah, actually, they only had 3 wins. This was a very good question. I thought all the history World buffs Cup match like you outside. would know Oh this. yeah, this But one. This was the most lame question according to me in the entire quiz. because मैंने UK I just because मैंने UK नहीं I लिखा। gave the answer ना नहीं 1987। यूके का नहीं है भाई, ये हाँ, बहुत देवांश भाई ऑब्वियस आपको काइंड ऑफ 5 पॉइंट क्वेश्चन मिले था। थे। मतलब मैं समझ ही नहीं पाया ये क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि सबको पता है 1987 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट होस्टेड द वर्ल्ड कप। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग बात ये है मतलब कि पाकिस्तान का फर्स्ट मैच हैदराबाद में था, अभी भी वही है। तो देखो एक्चुअली में क्या था, इस मूवमेंट से जब से सब्जेक्टिव चालू हुआ तो ये डीएलएस मेथड लग गया था यहाँ पे, किसी को समझ में नहीं आया क्या करना है। तो हाँ इसलिए राइट Yeah. then yeah, this one I think I gave full marks to Shreyans bhai because उन्होंने मेंशन कर दिया था ये इसमें। सॉरी मैंने मेंशन किया शिखर था। ने. शिखर भाई को इसमें, बिकॉज
दो मैचेस थे 2003 वर्ल्ड कप में जो नहीं हुए थे, एंड ही मेंशन्ड बोथ द टीम्स जो हु डिडंट ट्रैवल, वन वाज इंग्लैंड, वन वाज न्यूजीलैंड। एंड इसका हाँ अपडेट ये था कि मैंने दोनों सुपर सिक्स में पहुंच गए थे, जिम्बाब्वे और कीनिया। इसी वजह से, राइट। इसी वजह से और सुपर टीम्स सिक्स को नहीं, बट सिक्योरिटी दे रीजन प्ले। से सिर्फ वो नहीं गए थे कि न्यूजीलैंड नहीं गए थे। हाँ इंग्लैंड डिडंट गो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, क्योंकि वो जिम्बाब्वे को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका वो जो चल अरे, रहा था एक्चुअली रॉबर्ट दैट्स एक्चुअली केन मुगाबे। या केनिया वेंट टू सेमीफाइनल, यू आर टॉकिंग अबाउट हम्म, सुपर सिक्स। या वो एक सरप्राइज विन ओवर श्रीलंका, या दैट्स व्हाई। हम्म, Then yeah, this match was again very interesting. 2019 वर्ल्ड कप, we don't remember it. इसमें जो 2019 वर्ल्ड कप एडिशन का हाईएस्ट स्कोर मारा था वार्नर ने 166, they they posted 381, but Shakib batted well and they made 333 in reply, Bangladesh. But it is मैंने वो surprising, एबीडी वाले मैच एक्चुअली गेस किया था, but it is जिसमें एबीडी ने surprising that फास्टेस्ट 714 is the highest aggregate. So in this World Cup, if two teams make like 350 each, तो I ये think we record, will beat this one ये because record of मुझे लगता है the इस वर्ल्ड कप ये में because breaking of the बिल्कुल middle होगा। overs, one less fielder outside. Because there are so many हम्म, pitches जहाँ 400 score कर सकता है, and if a team replies with 350, you know, this record will be very likely to broken this World Cup, will break in this World Cup. हम्म, बैंगलोर में तो हो ही जाएगा, बैंगलोर या मुंबई में। Yeah, Bangalore. And then this was the last question. जडेजा के 77 से ज्यादा runs किस मैच में बने हैं नंबर 8 पोजीशन से by a batter, and that was Colton Nile. So in the again in the last World Cup itself. अच्छा मेरा आंसर आ गया, एंडी बिकल। By the way, guys, ये warm ups जो चल रहे हैं World Cup warm ups, what do you take out from this? Unfortunately आधे मैचेस तो बारिश हो गया है, but नथिंग, रोहित शर्मा एक्चुअली सेड द परफेक्ट थिंग, बोले दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी एंड वी हैव टू डू इट। Someone was tweeting saying that in after 2 months, Indian team will provide me a proper health. ये क्या बोलते हैं, ये लोग रेस्ट ले रहे हैं ना, हाँ उसका हेल्थ का 2 months में हमें पता चलेगा कितना इफेक्ट हो हमारे ऊपर। हाँ। नहीं, but लाइक या इंडिया टीम को यार इनफ प्रैक्टिस मिल गया, ठीक है, उनका सीरीज हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, दे हैड द गुड एशिया कप विन, बट दे हैव टू थिंक अबाउट अदर टीम्स आल्सो, दे डिड नॉट गेट इनफ प्रैक्टिस। नेदरलैंड्स कर्नाटका के साथ खेल के आ रही है, दे रियली नीडेड दैट वार्म अप्स। एंड देन सिमिलरली साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान वर वेरी अनलकी, दे कुड हैव, दोनों का भी यही क्वेश्चन मार्क है कि हाउ विल अफगानिस्तान फेस अ गुड पेस अटैक एंड हाउ विल साउथ अफ्रीका फेस स्पिन अटैक। वो दोनों को प्रैक्टिस करने का मौका मिल सकता था इस वार्म अप के थ्रू, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। वैसे Basically, this warm. दिस स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया आल्सो, हाउ विल ऑस्ट्रेलिया फेस अ गुड स्पिन अटैक, नो वो उनके दे साथ एटलीस्ट, है। ओ या एक्चुअली इंडिया ने अच्छा किया कुलदीप को नहीं खिलाया उनके अगेंस्ट। हम्म। Arey, I was reading. Remember when नहीं, Australia came to play एक मिनट, Test? कुलदीप को जब खिलाया तो वो जीत गए थे, ठीक है। तो वो लेट्स काम लास्ट में खिलाया एक्चुअली, हाँ लास्ट में खिलाया। हाँ, Yeah. एक्चुअली बिना कुलदीप के ही वो I हार think रहे we have थे। never talked about So that game. It was very disappointing chase effort from वेरी India. बिजार गेम, इट वाज अ वेरी बिजार गेम। We were completely in the game until that Shreyas and KL were batting. Then suddenly, how can we lose by 50 plus runs? Like that was a very pathetic chase effort by India. Even pitch though also slowed down after with the old ball. That's why we also made a comeback in the first innings with oh the yeah, old ball. they should have नहीं, scored आई four थिंक goals. we'll be struggling in this kind of matches Yeah, wherever the 350 target is is like 350 plus 320 plus matches. It will be difficult because we have accumulators in the middle overs. And if you saw how Mitchell Marsh played, I was just seeing the highlights of that match, and Mitchell Marsh didn't even care for his century. Like he just wanted to take apart Kuldeep Yadav. He got out at 96, and if you see Indian batsmen, they would have certainly taken singles at 96. But I have to appreciate Mitchell Marsh. Like he was just going for every ball, and But Shikhar, that's a very different scenario. No, Shikhar, that's a different scenario altogether. पॉइंट ये है कि मिशेल मार्श वाज बैटिंग, और जो हमारे प्लेयर्स जिन्होंने भी सेंचुरी मारी है, दे वर कमिंग आफ्टर इंजरीज, तो दे हैव टू प्रूव दैट दे आर फिट एंड दे आर मेकिंग रन एंड फॉर्म, तो उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे मुझे नहीं 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 लगता देवांशु भाई, कि सेंचुरी मारने में क्या कंपैरिजन है? ऐसा तो होगा मतलब सिचुएशन में।
केवल एक जने को छोड़ के, विराट कोहली। नहीं मतलब मुझे लगा नो, उन्होंने उस दिन ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेली, मतलब हाँ, आई मीन अ, स्टार्टिंग में इतना अच्छा स्टार्ट दिया है ना, वहां पे ही हम लोग और और मैं आपके साथ देवांशु भाई पूरा एग्री करता हूँ। वो एस्टोन एगर का जो सिलेक्शन है ना, दैट इज अ बिग, मतलब कि इंजरी नॉट, मतलब इंजरी है। एस्टोन एगर का इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया फिर भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो लोग इतना फियरलेस खेलते हैं ना। आई थिंक वो लोग इंग्लैंड को ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। जैसे उन लोग उन साउथ अफ्रीका में भी वो सीरीज हार गए, बट उनका स्टार्ट जो था ना बहुत अमेजिंग था। मतलब हर मैच में दे वर स्टार्टिंग लाइक 10 ओवर्स में 90-80। तो कहीं ना कहीं वो एस्टन एगर का तो बहुत बड़ा कमी बट द खलेगा। थिंग इज शिखर, दे बट नीड देयर यही यही प्रॉब्लम है एक्चुअली में। यू आर सेइंग करेक्ट शिखर कि दे आर मैचिंग इंग्लैंड, वेरी वेल। बट इंग्लैंड हैज दैट थिंग कि इंग्लैंड हैज थ्री स्पिनर्स एंड हम्म अब्दुल रशीद, आदिल रशीद। So these three will play all the matches. but the thing is तो also वो Marsh has वो to चाहे start बैटिंग में well कितना to भी get that boost for them in the starting overs. Well, if you यस see यस in यस first match, Marsh went for it, but he got out quickly, and that's where they were restricted to 270. And another thing I'm surprised to see that they haven't tried Green at the top again. They used to try him in the and T20. I also see a situation and I also see a situation. One more point. अभी David Warner is making lot of runs. Second, definitely in World Cup you will see teams are starting with the off spinner against him at the start. वो उसको चांस नहीं देंगे पेसर्स के सामने. So they will make sure कि he always get a spinner, off spinner or something. So उसके लिए बहुत difficult होगा वार्नर के लिए. हाँ, वो सब तो सही है। मैं तो सोच रहा हूँ ये वर्ल्ड कप पहली बार है जब न्यूजीलैंड आर कंटेंडर्स एंड नॉट जस्ट डार्क हॉर्सेस और प्रोबेबल्स। दे आर डेफिनेटली कंटेंडर्स फॉर सेमीफाइनल्स एंड द चैंपियनशिप। Even the other day, the way they chased in that warm-up match against Pakistan, I think it was a statement to both India and Pakistan. जो लोग सोचते हैं कि oh 340 is a good score. New Zealand was trying to show us both the India and Pakistan teams that nothing is a good score. You also have to bowl really well, and you Pratik, basically. but बट they have प्रैक्टिस मैचेस को इतना वो better, नहीं ले सकते यार, वो तो So but are you still guys मतलब saying कि consider कर न्यूजीलैंड वो सकते चेज हैं नहीं यार कर पाता शिखर. if it was a real match? 345 चेज नहीं कर पाता because they chased in 43 overs, not 58th over. And also they have a better firepower down They after fifth down, like fourth down. नहीं हमारे पास तो accumulators है, तो New it's warm Zealand up has everything. New Zealand has good warm openers, up very games को. reliable. Conway, and then they have excellent middle order player Williamson and Mitchell. Mitchell has proved himself now. He's a very quality player. And then they have spinners. They have all rounders, and they have that threat Trent Bolt. So they but have but everything. what would be the better options like But pitches पे I will टॉस still जीतने say के बाद? I will still say don't go by any warm up games results because bowlers don't bowl बॉलर्स at आर their नॉट full बॉलिंग pace, फुल आउट पेस या and like Shaheen didn't even play, and Yeah, but he was just floating the ball. He was not bowling at Even Shadab didn't bowl. 150 or something. He was just coming and just floating. स्विंग मिली और उसने आउट कर दिया. but तो वो The I big think he's positive आप for उसको कंपेयर नहीं Pakistan कर was सकते कि वो Shakil. असली मैच Shakil में क्या का करेंगे. innings. South Shakil, yeah, अच्छे six Yeah, मारा but actually. do you reckon he will play Shikhar? हु That's a good question. Shakil. नहीं, South Shakil will play. साउथ शकील, शकील विल यस नॉट यस, प्ले. आई थिंक ही शुड प्ले, बट ही आगा शुड के प्ले। इस पे आना है यार, but आगा was bowling like ही विल नॉट almost 10 overs प्ले, bowl इतना किया था. टैलेंट नहीं है. No, again, it's a warm up, but the shots, that range that Shakil had was very good. Some of his sixes were, It will be between Aga and Shakil then, yeah. whoever Actually, plays. आई their थिंक weakness शकील is शुड प्ले। Rizwan. वो रिजवान इतना स्लो खेलता है भाई, वो भले 100 भी मारता है, बट वो 100 तो यार वो मारेगा नहीं रियल मैच में, तो सच वार्म में अप में यार, मार दिया they 100। were so slow, man. I don't know नहीं, why they were रिजवान playing केएल so से slow ज्यादा in the स्लो है। beginning. If we do you Shikhar, what will be the ideal score for us to chase? Like 320, 330 chase कर सकते हैं क्या हम लोग? 275, 275 for us, not more than 275. I don't trust
this batting lineup But यार more than on paper तो 275. they should even chase 370. मतलब वो क्या लाइनअप है हमारा हर But हर बार की तरह someone has चार स्पेलेड. to क्या बात कर fire रहे in हैं भाई? the top order. रोहित या गिल के फास्ट 50 के साथ हम लोग 275 ही चेस कर सकते हैं. अगर रोहित और गिल हाँ थोड़े बड़े सेंचुरीज मारेंगे तो हम मे बी वी कैन चेस 300, भाई बट वो डेफिनेटली third नॉट one मोर day देन they 300. what I was watching the third one day. VK and Rohit, they took quick 2 runs here, and that's it. He was like huffing and puffing Rohit, and next over में out हो गया. So I बट can't रोहित believe वाज how प्लेइंग he, सो ब्यूटीफुली मैन. दैट कवर ड्राइव के ऊपर yeah, 2 छक्का मारा यार. आई वाज शॉक्ड मिचेल स्टार्क को. भाई मतलब इतने साल हो गए ये दोनों अच्छे कवर्स से के ऊपर. बैटिंग नहीं करते यार. वो रोहित और विराट का नहीं बनता है सिंक, बिकॉज विराट इज एबल टू हैव गुड पार्टनरशिप्स विद ऑल द अदर बैटर्स. उनको कितना भी भगा लेता है, बट विद रोहित इट्स डिफिकल्ट एंड रोहित का गेम भी अफेक्ट हो जाता है. So if Rohit is on song like he's already on 50, then should we send someone else other than VK? they decided this will be That the is lineup. not going to happen भाई. Let's not yeah मतलब delve into things that team management is not going to do. वैसे तो अरे बहुत tell me कुछ हो about सकता है. Ashwin's selection. I think it's good actually. Ashwin's selection is very timely. मतलब अरे एक चीज है शिखर. यार, इंडियन टीम realized this thing because there was variety missing in the bowling attack first Hmm, of all, and they realized there are too many teams like New Zealand and Australia who are totally left-hander heavy. yeah. So yeah, again they thought of their matchups. They went back to their matchups theory, but obviously I still can't understand like Yuzvendra Chahal could not make the 15 even after so many injuries. Like Yeah. team management doesn't trust him. I think it all comes down to his batting. So that is the Hmm, differentiating factor. And true. Ashwin, team management believes is an okay batter. And also he performed in the first game, right? So that Yeah, uh, he that is played bowling into Honestly, well, his. was really well. He's bowling Hmm, well, and he has that beautiful Thikshana delivery that he has Dictionary, developed yeah. now. Hmm. That different अरे kind I of a wanted carom to bowler. tell you one thing. I was reading कि Australia Hmm. called that Ashwin duplicate guy where they used him to ball before the Hmm. test camp. that's it. And he declined, man. He didn't come. Yes. He, Oh, he declined. Wow, man, I want to look into this. Yeah, he acha. declined that request from Australia because He could first have game given is him against like India, right? 100,000 easily. Hmm. Hmm. Yes, Hmm. yeah. Hmm. But I don't see मतलब why he should be doing something like that. Uh, यार पता है इंडिया में लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्रिकेट को लेके. बट पॉइंट इज कि बीसीसीआई शुड गिव देम, अगर वार्म अप मैचेस करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, you should give the teams what they are asking for when they are coming to your home country, so that when you also go abroad, in Australia, so they also give you pacers, they also give you good net bowlers. Mm. So this is little bit illogical. Another After thing all, is like, yeah, these cricketers, they don't earn so much money who are only playing until Ranji level, and if Yeah. they're not about to get into IPL. So BCCI should hmm, really allow these players to play in hmm, PSL and Lanka Premier League. And that is to anyway not happening. But Yeah. so let's talk about some other teams now. I think we have already covered South Africa, Afghanistan, New Zealand, uh, Pakistan. Obviously, not much to say, but uh, yeah, yeah, I'm very Naseem shocked. Shah is a big blow. Devanshu Bhai said Australia, he thinks he's weak in spin department because they only have one spinner. I Hmm, think another big team will be Pakistan, who is really weak in spin department. hmm, अबरार को इंक्लूड नहीं yeah. किया, इमाद वसीम को भी नहीं लाए, तो That's why Hmm, warm up में आगा को वो 8 overs डालने दिए यार. I think hmm. Aga might play because of that reason. उसामा में प्ले, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसामा को ही सामा ने खिलाएंगे. अच्छा बॉलिंग हाँ किया था, उसामा भी बॉलिंग डाला Hmm, था बट एट थोड़ा नाइन सा रन ओवर्स ज्यादा खाया था, बट ही बोल्ड डिसेंटली. hmm. उसामा मेरे को ट्राई Yeah. किया. But yeah, I think they still in the illusion. Maybe the captain is still in the illusion that Shadab is my best spinner, but he's more of a Hmm. batter now, and maybe But T20 they game changed him. but their approach is very defensive, man, worse than India in the starting four. Yeah. So Yeah, it Vishnu, will what do be. you think now? Shardul Thakur is totally out. Totally, matlab he has no chance.
Yeah, that's What what do you I'm think now? getting a feeling, man. I think Ashwin will play like Dave sent the other day, three paces and three spinners. So I Yeah. think guys लास्ट मोमेंट पे भी परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट बिकॉज जैसा चहल के साथ हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है ऐसा सिराज के साथ भी हो सकता था। शामी को खिलाते वो लोग अगर सिराज वो 6 पर नहीं लेता रिसेंटली। एक्चुअली भाई हाँ, लास्ट मोमेंट का ही परफॉर्मेंस काउंट होता है, यही दिखा दिया इन्होंने कि लास्ट मोमेंट का ही। और मतलब कि वही एक्चुअली ये रवि शास्त्री का थ्योरी है कि यू ऑलवेज टेक द इनफॉर्म प्लेयर टू एनी वर्ल्ड कप, और उसका ही थ्योरी पे अभी भी चल रहा है। तो वो लास्ट 4 इयर्स का परफॉर्मेंस तो मैटर ही नहीं कर रहा है, और अभी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दें ये लोग टू एकोमोडेट स्काई। टू अकोमोडेट दैट केएल इज, जो अगेन लास्ट मोमेंट में परफॉर्म कर दिया। नहीं, हाँ, I think वही लास्ट मोमेंट Iyer will play परफॉर्मेंस ही। yeah, Iyer will play in place of Ishan के spot Iyer ले लेगा and KL will come next. So as you said, Iyer was performing, but Sky, I don't think he will make it to the 11 man. It will be too hard to replace any any of the players And what do you because think? You were saying Iyer versus Ishan. So you think Iyer will play, or you see Ishan playing no, Iyer will against play. Ishan Australia? will be sitting out, man. He या didn't अय्यर perform विल that well. If he scored at least like 50-60 runs, maybe there is a chance, but I think Iyer will play now. And बट अय्यर का 100% सीमेंट नहीं हुआ। अगर उस दिन भी 50 मार देता ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लास्ट ओडीआई में देन इट वुड Mara na? नहीं Mara. 49 मारा शायद। 49. Oh, ओह yeah, आई थॉट हाँ, 49. 50 समथिंग मारा। ओके Yeah, 40. But still, he was the better player he in was the those. best among all. हाँ, या रोहित I के बाद like वही शायद बेस्ट था। I रोहित like वाज the नेक्स्ट approach and लेवल। intent, man. The starting runs he scores very quickly. That's where he's giving that Hmm. boost, even though if the wickets were falling. I actually made a video on Shreyas Iyer. That was the last video we uploaded. तो I said the same thing कि मिडिल ओवर्स में फास्ट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 फील्डर्स इन रहेंगे। Yeah. I mean only 4 will be outside the circle. So actually you need a middle order striker, and that's why players have Glenn Phillips. Like they have actually T20 batters, Klassen, Glenn Phillips. These kind of players are there in other 11s. And Yeah. even in Australia, you have Maxwell, someone like Maxwell who can play attacking cricket. But unfortunately, we don't have any such option except for Shreyas Iyer. श्रेयस Actually, he's अय्यर the इज only hope. but problem is lower down the order when you need even more fast strikers. Both KL and Hardik start slow. That is another worry we'll have. Even I'm worried about Jaddu's, man. Jaddu is also Jaddu facing. is the Hardik and biggest KL. worry, actually. All Yeah. three takes Yeah. first 10 balls to start scoring, and that's a huge Yeah. problem. You can't give those 5 overs away. The 10 balls, 10 balls each. That's the See, problem. actually, the thing is, we are worried, but it seems home condition में इंडिया का what Jarrod Kimber का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहा है इंडिया is still average wise, we are still above the other countries like South Africa, New Zealand, Australia. Our middle order is still above these countries in terms of average. The Yeah. only problem is strike rate. For us, the problem has been strike rate since T20 World Cup. But how will it come into effect? Will it be because हैदराबाद का जैसा पिच दिखा मुझे, और हैदराबाद में तो definitely 350 will be a par. Fine. Same will I think go for Bangalore and Mumbai. चेन्नई as well. So चेन्नई में नहीं फर्स्ट चेन्नई इनिंग्स में वाले तो मार सकते हैं यार 300. नहीं बट चेन्नई में हमेशा विकेट्स गिर जाते हैं। दैट्स व्हाई द रन रेट बिकम्स लेस। Chennai will be Yes. like I think more like 275 kind of Yeah. track, and Lucknow maybe 250 ईडन पार्क kind भी of track. हाई स्कोरिंग होगा शायद Yeah, फिर. Eden Park होगा I think. हाँ, And Pune will be high Eden scoring. भी high Pune will be scoring very होगा. high scoring. I don't know how the Modi Stadium will play, man. Yeah, man. That will be high scoring. That will be actually the 350 400 kind of stadium, because even if it's a big stadium, it's not a big ground. It's a Yeah. small. Yeah, it's If a you small. see the IPL final also, which happened there, 450 runs were scored in IPL final. Yeah. And always it's been a high scoring ground, and एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे राशिद खान को भी लोग मारते हैं, तो उधर तो डेफिनेटली रन्स बनेंगे. Yeah, but Yeah. that match was very weird. Like हम लोगों का कोई फाइट नहीं था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट
And Virat का innings भी अच्छा था यार. I mean, 56 of 61 is not bad by any means in Yeah, that. he was playing better, but lower order, man. Lower He, order is the I problem. didn't understand. He hit so many sixes to Mitchell Stark actually, but how did his strike rate didn't cross 100? Matlab, should- I didn't understand that. And he is normally a player who, if he hits sixes, then he will take lot of singles and he will ensure that strike rate is above 100. Yeah. But still, इतना sixes मारने के बाद भी उसका strike rate 100 से नीचे था. That was हाँ a यार. shocking in a chase of 350. But Actually, he still, was also struggling with the spinners. वो rotate नहीं कर पाया उतना ज़्यादा. And now actually, if you see Vishnu, KL is rotating the best. Actually, at least he's taking the singles. He's not going for those big shots. But But game has changed I so think much. Like the person who is anchoring his strike rate needs to be 100, and other players' strike rate needs to be between 120 and 160. That's how the game is now. So what KL is doing, he's playing those 80 strike rate innings, which is still slow. but he's at least giving singles. Matlab he's Yeah. And then rotating the forming strike well. partnerships. So yeah, that's. He's rotating the strike. Obviously, India has two anchors like KL and Kohli. These two Kohli. are anchors only, and it will be a big challenge for actually Rohit Sharma and Shubman Gill to give us fast starts, because without that, definitely we are not going to win But matches. the big players will play, I think, really well. Kane Williamson showed his form, and then Steve Smith, if you have seen in the last two innings, he started playing fast. I remember in the first two matches or first match, he was playing at strike rate of 60 or 70, but then he showed like very good acceleration in the last match. So he will again come to the party. Virat will come to the party. How do you think Actually, Gill the will problem perform? with Australia is two matches in Lucknow. They have two matches in Lucknow, and they have only one main spinner now, that is Zampa. And they have actually tough teams. South Africa is there and Sri Lanka is there. I think these two matches are very, very important. And these are in the first week of the World Cup itself. In the first and second week of World Cup, they have actually the toughest start to a World Cup. They have India first, then they have South Africa, then they have Sri Lanka, and then they have Pakistan. I think first four matches उनका ऐसा है. और उनका भी नेदरलैंड्स ये सब लास्ट में, अफगानिस्तान नेदरलैंड्स ये सब पूरा एंड में है ऑस्ट्रेलिया का. So they have the toughest start actually to the World Cup. So luckily they got good practice actually, 3-match ODI series. So I hope they start well. I want Australia to be in the semi-finals. I didn't vote for them because Ashton Agar is out, but I want Australia to be in semi-finals. They will make it very interesting. They always make it very interesting. I was surprised Jared Kimber said that their worst case is semi-finals. I know he said it for India and England, which makes sense. But Jared Kimber said that Australia's worst case is also semi-final, which is over-ambitious. But at the same time, if you guys see Mitchell Stark's hat-trick, oh, that was some bowling. That was old days, 8 years ago, 2015 World Cup kind of stuff. He's always had, even in Ashes, he bowled that beautiful ball to, I think it was Ollie Pope. So, वो तो है. Mitchell Stark का, he's not faded away like Irfan Pathan. मतलब वो swing उसका हमेशा ही रहा है. But I think pace that भी है. they start hitting him, जैसे against Rohit होता है, तो he starts bowling wide, which is his problem. Like उस पे थोड़ा attack करो ना, he comes under pressure. But the thing is, with Stark, you will get one bad ball every over. He's not that You will get one consistent. bad ball, and this was Netherlands. Netherlands को you can beat with pace, but other teams के against, it will not be that easy. Yeah. And it will be interesting to see. मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक चीज है भाई, वो लोग अपना पेस पे हमेशा रिलाई करेंगे, no matter the conditions. You make them play in Uganda or you Arey, one make more them thing, play. Shikhar, before time. So, first game is England New Zealand, right? England still didn't had their warm up game. So, what do you think? How do they perform? Do you think? I think England का मुझे अभी थोड़ा पता नहीं चल रहा है उनका कॉम्बिनेशन क्या है. मतलब even though I they wanted had, to ask you guys, would you play Malan and Root, both of them, or just one of them? I think they will play both. I think they will play both, but I don't understand. मतलब उन लोग ने इतना फालतू सीरीज रखा किसके अगेंस्ट, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आयरलैंड के अगेंस्ट रखा जिसमें And वो भी home कोई पे. था भी नहीं. क्या मतलब कर रहे थे वो लोग. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में भी उतना पता नहीं चला कि क्या कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली होगा. They also are resting lot of players And actually, they and got Brook now. और भी confusion create कर लिए. हाँ, they are also massively confused now with Brook and Stokes.
I Stokes, don't know मतलब Root, कि Malan, ये Malan उन भी अच्छा But what परफॉर्म किया. little I saw in that New Zealand series, they came back really well. Stokes got a big 100, and then their bowlers bowled well. I know Markwood is still yet to bowl, but at least Vokes were among the wickets. The new guys were among the wickets, I and I still Joplin feel will कि be they there. should have taken Roy in place of Brook. Brook is not like a good performer. I felt in the Actually, spin Roy department. will be a big miss, man. He is Yeah. so good in India, and I don't think the only thing is England have this spinning and pacer all rounders ना वो लोग उनका बचा लेते हैं. They save their और asses ब्रूक actually भी every उतना time. स्पिन अच्छा नहीं खेल सकता यार. ही प्रूव्ड इट इन आईपीएल एज वेल. स्पिन के बॉलिंग में वो मार भी नहीं सक रहा है. So Yeah, Brook it will will be be a a weakling challenge if for him. he'll play, but I don't think Brook will be there in the starting 11. उनके लिए finisher में लिविंगस्टन और बटलर ही होंगे. And Butler can be a real ABD. Actually, he can be very devastating if he gets 20 overs to face, like 30 to 50. So Yeah. and then Sam Curran they have very many I think finishers. Sam Yeah, Curran won't actually, play, man. their main advantage is Sam Curran, Moeen Ali, and Liam Livingston. These three Yeah. guys, I And for think, are Sam the Curran 10 to 30 खेलेगा. overs, they will look at Ben Stokes and Joe Root. So I don't think they need Brook in the starting 11. but they will be massively confused. Like Vishnu, you said, na, Yeah. there are too many people actually, Yeah. and they will be. It will Even it will be very. be confusion between Sam Curran को खिलाए या Vokes को खिलाए, because both are very good all-rounders. But Sam Curran is in Indian conditions. I think And he you was the will man of the always play series in Sam Curran. the T20 World Cup. So Sam Curran will play. Sam Curran is better defensive bowler than Vokes because he knows how to bowl the slower balls And he better can also, than he has also Chris opened the Wood. bowling so many times, not just the Yorkers in their depth, but he can also open. Hmm. The only teams So we didn't talk about, guys, is Bangladesh and Sri Lanka. That warm-up match, Bangladesh chased the score very comfortably. So, do you think they can win 4 or 5 matches in the World Cup? Bangladesh, I nah. think they can win. No. Oh, that's a It big is very statement. good. If you see, I think they are now one of the best five pace attacks in the world. So that is one very good thing because they have the backup bowler as Tanzim. He is not even making their final 11. So who is It's a very actually a dangerous bowler. good thing by Shakib to just kick out Tamim Iqbal, who was not looking, a team man. And that guy Tanzim will do well, I think. But Shakib himself got injured after that. So I don't know what is the Yeah, status they are on that. saying he won't be. It's doubtful now for the first game. Actually, Actually, their अगर problem is जाता तो top order. Bangladesh They is don't that have. guy Mushfiq, man. He's their legend, but he starts very slow. So his slow innings can also hamper the Even momentum. Mohammedullah, man, he slows down. He also He's just a starts very backup. slowly. Mohammedullah is just a backup now. Yeah, but he plays very slow. And top order mein there are no remarkable players. Like Tamim was Yeah. actually one good player in top order. Now Litton is there, but I don't know. Matlab, who That's will why support they him? have pushed Mehdi Hassan in the top order. Yeah, it's time up, guys. Yeah, maybe. So yeah, we'll be probably doing a more detailed preview tomorrow. I'll again do some teams. But yeah, good chat and good quiz, Pratik. So Yeah, very really good like that. quiz, man. Yeah, of course, guys. Yeah, But yeah, World Cup is just 4 days away. It's hard to believe. yeah. So I have holiday tomorrow, so I'll be making some more videos probably. If Vishnu you're free, I'll give you a Monday, text. right? Yeah, I'll be free Yeah. in the mornings. Okay. I know Pratik Chalo. will be busy. He's a busy